Madam, ICDS is one of the visionary projects initiated by late Prime Minister Srimati Indira Gandhi. Now, already 6 services are under. One minister has given the answer itself. 6 services, including supplementary nutrition, preschool, non-formal education, health and nutritional education, immunization, health checkup, and referral services are provided to the pregnant woman and lactating mother. These are the services. These are all done by these Anganwadi workers and helpers. Madam Speaker, you know the remuneration started with 100 rupees in 1976. Now it is in 3,000. Started with 100 rupees in 1976. Now we are in 2017. It is only 3,000. Honorable Minister, while replying Dr. Sanjay Ji, mentioned about devolution. Honorable Finance Minister is also there. Everything for centrally sponsored scheme. Now only one answer: devolution. We have given enough money to the states. And Madam Speaker, I would also invite your attention regarding the answer also. Here the answer sheet itself is entirely false, Madam. As far as Kerala is concerned, we are giving 7,000 rupees, 7,000 rupees from Kerala state. But as per your answer, 2,000 only. In Karnataka, 20,000 Anganwadi workers are going on a strike. Last week, Honorable Mallikarjuna Kharge ji raised the issue. How can we, minimum wages are there in every world? Why these Anganwadi workers and helpers are not applicable to that minimum wages? Therefore, there should be something, Honorable Finance Minister. We are doing everything for everybody, but these Anganwadi workers, they deserve maximum amount of consideration from the Government of India. Therefore, my question to the Honorable Minister through you, Madam, whether the Government of India and also Minister told that Supreme Court had given a verdict against the enhancements of the enumeration. Is it right, Honorable FM? Supreme Court had intervened for enhancing the wages. Therefore, I would like to seek an answer from the Honorable Minister whether the government is going to enhance the wages of Anganwadi workers and helpers. Madam. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी बताया, माननीय सदस्य ने ध्यान से सुना होगा कि ये सीधे ये सिविल का पद नहीं धारण करती हैं, क्योंकि मानदेय निर्धारित होता है तो जो हमारा भारत सरकार का है, और सीधे अपने राज्य की अलग अलग जो है समस्याएं होती हैं और आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए 14वें वित्त में आयोग की सिफारिश में राज्यों को कहा गया है कि आपको बहुत बड़ा धनराशि दी है, आप अपने ढंग से उनकी सेवा के अनुरूप पैसा। प्लीज नो, दिस इज नॉट अ वे। यस, आप माननीय सदस्य, ये जो आप कहना चाहते हैं, जैसे राज्य ने जो आंकड़े हमें प्रस्तुत किए हैं, कर्नाटका की आप बात कर रहे थे, कर्नाटका में ऑलरेडी जो है कुछ, मैं वो आपको पूरा आंकड़ा प्रस्तुत करूंगी माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको आपको उपलब्ध करा दूंगी। आप खर्च नहीं कर सके तो शेष जो है नहीं पहुंचाएगा धन, इसलिए वो आंकड़े जैसे राज्यों ने दिया है वही आंकड़े हमने यहाँ पर प्रस्तुत किए। अगर कहीं कोई कठिनाई होगी तो हम लिखित में आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री ने मेरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।